नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबिज़ू बिल अल्क़ाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुल मौलाना करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना बिंदल मौती ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुछ हालात हाज़िरा के मुताबिक आज का उन्वान मेरे अजीज़ शिकागो के लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन सिद्दीक़ भाई, जिन्होंने तकरीबन मैं रास्ते में था मस्जिद को आने से, तो आपने दरख्वास्त की कि आज कुछ हालात हाज़िरा के मुताबिक जो मसले मसाइल है उस पर जो फेसबुक और सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, इस पे कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में रोशनी डालने की दरख्वास्त की है। शॉर्ट नोटिस की कोशिश करूँगा। आज मैंने सूरतुल हुजरात की तकरीबन 11वीं आयत की कुछ हिस्सा मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया। वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबिज़ू बिल अल्क़ाब से पहले इस आयत को जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहकाम हमारे लिए जारी फरमा रहा है ईमान वालों के लिए, ऐ ईमान वालों, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है वो लोग इनसे बेहतर और ना औरतें ही दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है वही औरतें उन मजाक उड़ाने वाली औरतों से बेहतर हो, और ना आपस में ताना जनी और इल्ज़ाम तराशी किया करो, और ना एक दूसरे के बुरे नाम रखा करो। जो एक हमारा एक अजीब माहौल होता है, किसी को कुछ बोलना है तो उसको नाम रख देते हैं, या फिर एक दूसरी भी एक हमारी कैफियत है कि हम अपने नाम बिगाड़ देते हैं। घर में मोहब्बत में नाम जो है, कुछ नाम रहता है, कुछ नाम बन जाता है। तो इसकी ताकीद फरमाई गई है कुरान में, वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब, अल्क़ाब से ना पुकार। जिसका जो नाम है वो मुकम्मिल नाम लेके मुखातिब होना है। ये तो एक शरई तकाज़ा है, ये कुरान का अहकाम है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया है कि किसी को अलखाब से ना पुकारो, किसी को बुरे नाम लेकर भी ना पुकारो, किसी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात को जानवरों से मुखातिब करके ना पुकारो, किसी पे बोहतान करके ना पुकारो। चूंकि मैं जहन बनाना चाहता हूं खास इब्ने अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अशरा मुबशरा, और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालू यानी अंकल, आपके ऊपर कोई झूठा बोहतान लगाता है, तो खलीफा दुवम का वक्त होता है, क्योंकि वो चीन से वापिस हो जाते हैं, तो वो उनकी पेशी होती है, अदालत बैठती है। तो आप खास इब्ने अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे इल्ज़ाम ये लगाता है कि ये माल गनीमत में से अपने लोगों को बांट लेते हैं, मुझे नहीं देते, जो इंतहाई उनके ऊपर एक बोहतान होता है। तो वो शख्स के लिए दुआ फरमाते हैं, फैसला तो आपके हक में ही होता है, क्योंकि इतना तमाशा किया है, ये किया है,
आप उसके हक में दुआ फरमाते हैं, अल्लाह इसे लंबी उम्र अता फरमाए। देखिए अल्लाह ने उनको इतनी लंबी उम्र अता फरमाई, वो शख्स को, वो मरना चाहता था, वो मर नहीं पाता। तो ये करता था कि सड़क पे लेटकर बैठकर जाने वालों को तंग करता था, नामों से पुकारता था ताकि कोई आके इसका कत्ल ही कर दे। बोलता था मैं मर ही नहीं रहा हूं। एक नौजवान आके बोलता है जी चाह रहा है तुझे कत्ल कर दूं। बोलता है यही तो ख्वाहिश है मेरी, ताकि मेरे वो जो गुनाह थे वो कत्ल में कुछ धुल भी जाए और मुझे एक नेक शख्स ने मेरे हक में दुआ की थी जो मेरे लिए बदवा साबित हो गई। तो जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो ये सोच समझ के उड़ाना चाहिए। जैसा कि मेरा एक फेसबुक पे बयान था कमोबेश 1 महीना पहले कि एक इज्जतदार शिकागो की शख्सियत पे एक बहतान लगा था एबीएन न्यूज से। एबीएन न्यूज जो आज की तारीख में कुछ ना कुछ मुखालिफत उम्मत मुस्लिमा या उसके उम्मतियों पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ढूंढते रहते हैं, तो उन पे बोतान लगाया वो जिसको ईमान नहीं है। यहां पे गुफ्तगू हो रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो जब उसने इल्जाम लगाया सोशल मीडिया पे फौरी एक न्यूज़पेपर है बड़ा मशहूर, नामी मेरी नजर में गलत है, सियासत पॉलिटिक्स को कहते हैं, न्यूज को नहीं। न्यूज होना चाहिए एतमाद न्यूज होना चाहिए मुनसिफ न्यूज। नाम से जो है ताल्लुक होता है हर शोबे हयात का। तो वो न्यूज ने फौरी शाये कर दिया ट्रांसलेट करके। एक मोमिन पे जो बोतान लगा था उस पे उसने शाये फरमा दिया। और तनाबिजु बिल अलखाब, वो अलखाब से पुकार रहा है, झूठे इल्जाम बोतान लगा रहा है। मैं समझता हूं कि वो सिलसिला जारी है। तो वो कहते हैं वो आपके साथ भी होता है, जो आप करते हो फिर वो आपके सामने आ जाता है। तो तकरीबन जितने शिकागो के ग्रुप है वो सारे ग्रुप पे उसका मजाक उड़ाया गया। आज उन्वान है मजाक का, लेकिन ये आग है, इसकी जद में सब आते हैं। मैं जब भी कहा अब भी कह रहा हूं, यहां पे मैं किसी की तायीद नहीं कर रहा हूं, ना किसी की मुखालिफत कर रहा हूं, ना किसी की बुराई कर रहा हूं। ये मेरी गुफ्तगू नसीहा है। ये किसी की बुराई नहीं होती, ये गुफ्तगू है, नसीहा है कि ईमान वाले के लिए आपको सोचना चाहिए कुछ कहने से पहले। वो सिलसिला आज जारी है। आज का उन्वान सिद्दीक भाई की जो दरखास्त है इसी वजूहात से कि उन ग्रुप चलाने वाले सोशल मीडिया के ये अजीब एक खिलौना दिया गया है, एक अजीब गैजेट है ये मजाक उड़ाने के लिए। हालांकि इससे अगरचे आप इल्म हासिल करना चाहो, 10 तकरीबन i360 एक ऐप है कुरान की जिसमें 10 फखरुल खुर्रा है, 10 फखरुल खुर्रा है, 10 ट्रांसलेशन है तकरीबन दुनिया की सभी जुबानें। जो इससे इल्म हासिल करना चाहते हैं, इससे इंतशार फसाद पैदा करना चाहते हैं, वो भी मौजूद है। ये वो खिलौना है जो सेलफोन है
जो आज की तारीख में इतना तरक्की कर चुका है कि हर चीज इससे दस्तयाब है, अच्छाई भी बुराई भी। तो हम जो अच्छी चीजें लेना है वो लेना चाहिए। इससे ये ईमान वाले का अमल नहीं है कि इससे बुराई हासिल करे। इससे बेहतरीन किसी शख्स ने कहा कि मैं इसको फेंक रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। मैंने कहा इससे बेहतरीन दावा का काम भी हो सकता है। आप तो ऐसे कामों में मुलविस थे जिससे आपका ज़मीर अब गवारा नहीं कर रहा है कि मैं इस पे इवन ऑन भी करूं। लेकिन अगरचे आप इसकी अच्छाई देखें, इससे जो दावा हो सकता है बेहतरीन दावा हो सकता है। तो हम जो आपस में बुराई कर रहे हैं वो दरहकीकत है क्या? कुरान क्या फरमा रहा है? आगे सूरह हुजरात की 12वीं आयत जो है, फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाला जो ईमान ला चुके, ये उनके लिए ताकीद है। आमनुज्तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला युग़्तब बअदुकुम बअद अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मय्यितन फकरिहतुमुह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। करो और ना पीठ पीछे बुराई एक दूसरे की। ऐ ईमान वालों, करो ना पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई। अल्लाह का काम है। क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? कोई पसंद करेगा? तो इससे नफरत करो। फकरिहतुम, करैयत वाली चीज है। और इन तमाम मामलात में अल्लाह से डरो। वत्तकुल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत कबूल फरमाने वाला है, बहुत रहम फरमाने वाला है। देखिए, हम जो आपस में ये जो गैजेट्स, ये जो सेलफोन्स है, इसको लेकर हम कहां तक जा रहे हैं कि हम इस दर्जात में आ रहे हैं। एक बड़ा अजीब माहौल है अभी राइट नाउ, उस पर भी रोशनी डालने के लिए कहा गया है कि जितने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुए थे, पीपीपी लोन और कोविड लोन, सारों की खबर खुद रही है। जो हुक्मरान हैं, जो ड्यूटी निभा रहे हैं, उनका अपना फर्ज है, लेकिन हमें आपस में खामोशी अख्तियारी करनी चाहिए। जो शख्स कर रहा है उसकी भी बुराई, जो अगरचे वो ऑफिसर बन चुका है, इस कम्युनिटी से अपने फराइज अंजाम दे रहा है, तो अपना फरीजा निभा रहा है। उसको गालियां नहीं देनी चाहिए, उसकी अपनी ड्यूटी है। मोमिन को यह इजाजत है कि ऐसे गलत काम करके पैसे बना लो। मोमिन को इजाजत है झूठ बोलकर लोने ले लो। ये बड़ा शर्म का मुकाम है कि ये सारे नाम मोमिनों के। वला तजस्ससू, कुरान फरमा रहा है तुम एक दूसरे की बुराइयों को ढूंढते हुए ना फिरो। सिर्फ ये इख्तियार हुकूमत को दिया गया है। जो भी हुकूमत यहां पे होती है, पुलिस होती है, अथॉरिटी होती है, उसी को दिया गया। आपको हमको नहीं दिया गया है कि किसी शख्स का मजाक उड़ाओ सोशल मीडिया पे जाकर, किसी शख्स को बोहतान लगाओ फेसबुक पर। बड़ा अजीब इत्तेफाक है, शैतान भी कभी भी तहरीर में कोई चीज लिख के नहीं दिया, सिर्फ इनकार किया है कि मेरी तकलीद आग से है, मेरी सिफत ऊपर जाना है। ये मट्टी से जो आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया है, इसकी सिफत मट्टी, ग्रेविटी नीचे आना है, तो मैं इसके सामने सजदा नहीं करूंगा। ताजीमी सजदा है, इबादत की सजदा है।
लेकिन आजकल का जो शैतान है इस खिलौनों को लेकर इसमें अपना सबूत दे रहा है, ग्रुप बना के उसमें लोगों को डालकर किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। किसका मजाक उड़ाया जा रहा है? एक मुमिन का मजाक उड़ाया जा रहा है। और बुराई करने पे तुम अपने सगे भाई जो मर चुका है उसके गोश्त खाने के बराबर है। Today I choose a topic called insult. You make fun of somebody, and that person, when he hears, even it's true. What is meaning of ghiba? Even a thief, a robber come in front of you, if you say something to him, you are a thief. If you want to say nasiha, get him on a side, one-on-one. Nicely tell him this is no good, this act is no good. You already bring iman. But insulting someone is bad in Islam. Choose a topic from Surah Al-Hujurat, especially ayat 11, some portion. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Do not insult one another, and do not call each other by nickname, by offensive names. There is a small advice, even in home, we call sometimes different names. For no reason. They should, I'm calling in love. But the Quran, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, Quran is warning you not to call in a nicknames or offensive names. Either one. So every time we speak, we have to call with the right name. As we all know, our names have connected to our personality. When we die at the day of judgment, we will be calling with our names. We're not going to be calling with our nicknames. So one of the bayan I released on Facebook maybe a month ago, somebody insulted a ABN News, who is the enemy of Islam, targeted one moment without any evidences. And that news, a paper called Siyasat, newspaper shouldn't call Siyasat anyway. Siyasat means politics. Newspaper supposed to call newspaper Etemad, Munsif, something that gives the proper names, proper meaning. So the Siyasat claimed to be with the people with the Iman, picked up a news from the non-believer and put it in their newspaper. By giving a nickname to that moment, quarter something. There is a liquor scam, literally, intentionally involved that moment for no reason, to destroy his reputation. But Allah subhanahu wa ta'ala is the one who gives the elevation in our life or humiliation in our life. No one can decide in this dunya except Allah subhanahu wa ta'ala. So that people with the iman use the same news and put on social media, newspaper, Facebook, everywhere. So these gadgets, what we're using, we can learn a lot of things or we can destroy ourselves according to these ayats.
There is a app in this phone I use and I send all the friends. I360. It's a Quran app. You can find 10 Qurans, 10 best Kharijs throughout from the world, maybe more. 10 different translations. So many languages you can learn. But at the same time, if you're in this WhatsApp groups, they're doing this bad things, using these newses and sharing it. To say something bad about a mu'min. When ayats of this Quran is warning that do not do this. And the next following ayat in Surah Al-Hujurat, when I talk about that, what happens? When we do that, we ignore, even we see, I remove myself from the groups. There is a lot of groups. There is a saying in English, what goes around that comes around. If you ignore things by watching it, it's also a crime in Islam. You have to say no. When they did a month ago, I released my bayan against it. Today also, the cycle is keep going. Yesterday is somebody else's time, today is somebody else's time. It's a revenge. They take revenge each other. That will never end. Unless, as a mu'min, you say to no. Everyone has to say to no. Remove from those groups if someone insulting you. Even if someone insulting another mu'min, you have to feel the pain same. If you get hurt, every mu'min has to feel the same pain. It's one body. Instead that, we enjoying it. The second 12, ayat number 12 from Surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran min az-zanni inna ba'da az-zanni ismun wa la tajassasu. Wa la tajassasu wa la yaghtum ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakrihtum. Wattaqullah inna Allaha tawwabur rahim. Now what happens when we do insult and backbite and spy on each other? Oh, you have believed. These are ayats for people who brought iman. Avoid much negative assumptions. Indeed, some assumptions is sin, and do not spy on each other. Like we talk about, there is a scams went through during the pandemic. People made millions of money in COVID businesses, in loan businesses. As a mu'min, we're not supposed to do all these bad things. Unless if that person is legit own lab, but everyone looks like does it. Now what happens? The authorities now taking an action against it. There is a questioning, there is a arresting is begin now. So the authorities have authority to do anything against those who committed a crime. But as a mu'min, we're not supposed to talk about it. As a mu'min, we leave it up to Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever he did it or somebody else did it, that's his act. Allah will take care of it. Or the authorities of this country, the laws of this land will take care of it. But as a mu'min, we're not supposed to talk anything about this. So this social media is giving us an opportunity
more than a shaitan. Let me remind you, shaitan never wrote anything against Adam alayhi salam. He only uttered to Allah subhanahu wa ta'ala, he only said that, you make me from the fire, and my quality is to go up. Fire usually go up. When you set up a fire, it goes up. He said, I'm not going to go down to Adam, because he made it from the mud, from the dust, and the dust, it comes back to the gravity, come back to the earth even you toss it up. He said, I'm the superior. But as a moment, we're using these gadgets and using a moment information and sending across. We becoming worse than shaitan. Shaitan never left any proofs. We are leaving our proofs in this dunya. This one can be used for a dawah. This one can be used for the best knowledge from the Quran, from a hadith. You can share with each other. Or this one can take you to Jahannam. Or this ayat is saying, do you like to eat your brother dead meat, a dead flesh? Fakrihtum. You're going to dislike it. You're going to hate it. So by saying against the moment, you eating your own dead brother flesh. May Allah subhanahu wa ta'ala give us hidayah to follow His beautiful Quran and Sunnah. Wa akhiru du'ana walhamdulillahi rabbil alamin.